Good morning, students. This is your computer online class. Students, in the previous class, we had completed lesson 6, and in today's class, we are going to start our new chapter, that is lesson 7, files and folders. So, students, here we learn about what is file, its types, files icons, and we will understand how to organize the files. So let's start the lesson, students. So, lesson 7, files and folders. Windows is an operating system which enables the user to interact with the computer. As you know, students, Windows is an operating system, and operating system के बगैर Windows कुछ भी नहीं है. Windows is nothing. Computer doesn't work without it. Okay. So it also organizes your documents and programs which are stored in files and folders for easy access at any time. और ये जो विंडोज़ है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स के रूप में. ओके. To understand the concept of files and folders, you can take an example of a wardrobe commonly used at home. So, such as suppose you want to store your clothes properly to find when it's in use. Then you have to store it in organized way. Okay. If you dump all your clothes in the wardrobe, it would create a mess and you will not be able to dress properly in a short time. और अगर आप ऐसे ही रख दोगे अपने क्लोथ्स को बिना ऑर्गेनाइज वे में, then what happen? It will be mess. ये इधर उधर बिखर जाएगा और आप ड्रेस को प्रॉपरली इन शॉर्ट टाइम में जब आपको उसकी ज़रूरत हो आप नहीं सर्च कर पाओगे. टू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपरली यू शुड यूज़ अ सेपरेट सेल्फ फॉर योर clothes like socks, undergarments, trousers, shirts. ओके. अगर आपको सारे अपने ड्रेसेस को अलग अलग ड्रेसेस को प्रॉपरली स्टोर करना है ताकि वो शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाए, तो व्हाट विल यू डू? You will keep it separate in the shelf. Okay. So similarly, computers stored information in files which are organized and grouped in folders and stored on disk. और इसी तरह सिमिलरली क्या होता है, कंप्यूटर भी अपने इंफॉर्मेशन को फाइल्स में स्टोर करके रखता है which are organized and grouped in folders, जो फोल्डर में ग्रुप्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर्ड रहता है. Okay, so that's why you can search your programs and files when it in use. Okay, you will get it easily. So next is files. What is files? A file is a group of data that has been created, named and stored on a storage media. ओके. फाइल क्या है? एक ग्रुप ऑफ डाटा है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके नेम लिख सकते हैं. ओके. एंड स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स. फर्स्ट इज प्रोग्राम फाइल्स, सेकेंड इज डाटा फाइल्स. सो फर्स्ट वी विल सी program files. What is program files? Programs usually come on disk. These are installed or copied to your hard drive in order to use the program. Okay, program किस में यूजुअली किस में आते हैं? डिस्क ड्राइव में. एंड दिस आर इंस्टॉल्ड और कॉपीड टू योर हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल किया जा सकता है एंड कॉपीड किया जा सकता है. ओके. Program files are executable because they contain the instruction. So students, executable means a file or programs able to be run by a computer. Okay, executable means what? एक फाइल और प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को रन करने में एबल हो, ठीक है, जिसके द्वारा कंप्यूटर चल सके. सो दे कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट. प्रोग्राम फाइल्स वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है वर्क करने के लिए. द प्रोग्राम फाइल्स कंटेन ऑल द प्रोग्राम्स सच एज MS Paint, MSW Logo, Microsoft Word, QBasic, Microsoft Excel,
Internet Explorer, etc. Okay. So students, here some example I will show in here that if you want to save any files, you have to click here save as, and then you have to name the file, and then you can save your files on the computer files. Okay, and your files and programs will be saved on your documents or your folders. Okay, like this way you can see here. So you can rename the files also, that school documents or photos or work. Okay, like this you can change the name of the files also. And in the desktop you can see like this all the files stored, which one is stored. So next is data files. The data or document you create is stored in different files. ठीक है, जो भी आप डाटा डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे वो डिफरेंट फाइल्स में स्टोर रहेगा. और डाटा फाइल्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल. ठीक है, ये क्या करता है, इससे कंप्यूटर रन नहीं होता, ये इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं कंप्यूटर को. एंड आर एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, और कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. Okay, and you can use only Microsoft Word to open, edit, print or view the data files created in it. So suppose you can use your Microsoft Word to open, edit, आप उसको ओपन करके इसमें वर्ड्स लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एंड एडिट कर सकते हैं, देन प्रिंट, और उसको फिर अगेन व्यू कर सकते हैं फ्रॉम द डाटा फाइल you created. Okay. And students, you cannot open a data file without a program file. Okay, data file को आप program file के बिना open नहीं कर सकते, but you can open a program file without a data file. और अगर data file नहीं रहा कंप्यूटर में तो आप program file से उसको open कर सकते हैं. Okay. So next is file icons. What is file icons? Your computer represents file with icons. All the files on the computer have specified file icons. By looking at a file's icons, you can tell at a glance the what kind of file it is. ठीक है, आप files icons से को देख कर ही आप पहचान सकते हो what kind of file it is, किस टाइप का ये file है. It is text or document file or spreadsheet file or Excel file or presentation file, what file it is. Okay, for example, using Notepad you create a file named myself.txt. It represented as an icon of the Notepad program. Okay, myself.txt means txt, means it is the file of icon of the Notepad program. Okay, here are some common file icons are given. You can see in this picture also some files that are Microsoft Notepad text file. It's look like this. And next is Microsoft Word file. It's document file. It will look like this icons. And then Microsoft Excel, then Microsoft PowerPoint, and Microsoft Access database file. You can see and identify that what kind of file it is. Okay, so you can see here it is shown in here on the screen also. It is Microsoft Access file. Okay, next we will see this is Microsoft Word file, document file, and next is Microsoft Excel file. And you can do here the spreadsheet work or calculation work. Next is PowerPoint PPT file. Here you can make presentation and all. Okay students, up to here today we will learn, and the remaining of the chapter we will learn in the next class, next video. Till the next video, have a nice day student.